If you're hearing this, ma'am, I love you. Megha Joshi. Megha Joshi. Yes. Related to me. No. My ex-wife. Wow. वह एक बहुत खूबसूरत टीचर थी जिसका मेरा मन करता था कि मैं उसकी क्या बलाएं हाँ। क्या कर दूं? बलाएं ले लूं। हाँ। मैंने कॉलेज में बंक किया है। बंक क्या किया, मैंने कॉलेज गया ही नहीं। पहले 2 साल कंपलसरी था हमारे कॉलेज में अटेंडेंस, बाकी के 3 साल में गया ही नहीं कॉलेज। आई हैव नॉट सीन माय क्लासरूम। रिया, डोंट होल्ड मी रिस्पांसिबल। जो उससे देखा है, मैंने सुना है, वो बता रहा हूँ। सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगा। हाय, मैं हूँ मेघा। मिर्ची प्लस पे हैं आप, और जो 2 शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, मैं दोनों को एक एक करके इंट्रोड्यूस करूंगी, तो गौर फरमाइए। पनीर का असली दाम जानने में इनकी मदद लगी हमें। साथ ही हमें मैनर्स सिखाए इन्होंने, ये बता करके कि हमेशा एक्सक्यूज मी करके बात करनी चाहिए। ही गेव अस सनशाइन, ही गेव अस रेन। और इस लक्ष्मण का बस चले तो ये सीता माँ को फरारी में ही रेस्क्यू कर लेते हैं। वाह भाई वाह वाह, ताली हो जाए शर्मन जोशी के लिए। और ताली के बाद तुरंत वो राइटर को यहाँ भेजा जाए जिसने ये बहुत ही ब्यूटीफुल पीस लिखा। मैं हूँ वो, आई एम दैट राइटर। लाओ लाठी लाओ। ऑल्सो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो मिलते ही रहते हैं, मगर हैव यू मेट द मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स? वेलकम मिस्टर बियला। That's true. That's a very nice way to introduce him actually. Thank you, sir. बात तो सही है। चेक भिजवा देना फिर मेरा। हाँ जी, चेक भिजवा देना। मेरा बाकी है। वेलकम आप दोनों का यहाँ पर मिर्ची पे। सबसे पहला सवाल, और बहुत ही क्लीशे सवाल है ये, और ये सबने आपसे पूछा होगा, बट मैं भी पूछना चाहती हूँ कि सब लोगों ने ट्रेलर देख लिया है, बट फिर भी आपसे जानना चाहती हूँ मैं कि क्या प्रेमाइस है फिल्म का, जरा बताइए। Basic premise of the film is how the parents and the society, school system puts pressure on children on so-called academic excellence and gives no time for art or leisure or drama or music. So it is that is a backdrop, and it is a journey of the drama teacher Sharman Joshi and the music teacher Saran. ये दोनों मिलके एक प्ले म्यूजिकल साउंड ऑफ म्यूजिक लगाना चाहते हैं, लेकिन उसको 7 बच्चे को इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। सो आप दिस इज बेसिकली दैट इज़ अ प्रेशर ऑन चिल्ड्रन, बट उनका मन भी है तो आना है तो भी कोई ना कोई रुकता है, पेरेंट्स या स्कूल सिस्टम। सो प्रेमाइस इज टू कन्वे वेरी सीरियस सब्जेक्ट ऑफ pressure on children, and but we told it in a very light and entertaining way. And for entertaining way to tell the people, I thought the musical format is the best. And since it is a musical and they are putting the play and the of Sound of Music, we got the rights to use 3 songs, and you will see the way we choreographed, nothing shorter than Hollywood. So the whole musical will be of a Broadway and Hollywood kind of a style, which is not a very typical style of the Indian song and dance films. Got it. Sharman, आप ऐड करना चाहेंगे इस पे? Yeah, the last part that Rao sir said, the USP I think is about how the story will be told. It'll truly be a musical that we've seen many a times in Hollywood films. In Indian cinema, we've seen as good as nothing of it, honestly. There are a couple of films that were just crossing my head as I was telling you, but they are not really in the way that Rao sir has treated this film. The dialogues exchange are also musically told or spoken, and that's the uniqueness of it, apart from a very nice, of course, a great script in hand, and score by the god of music, Ilya Raja sir. And did you mention about the 3 Sound of Music tracks? Yeah, you can mention. Yeah, the 3 Sound of Music tracks, since it's Sound of Music, the play that they are attempting in the script. So Rao sir went out and approached Sound of Music, Hammerstein and Rodgers and Hammerstein. For the rights, and to use the 3 original soundtracks of Sound of Music in our film. So I'm a Sound of Music fan. I loved that film, and I love it even today. I can sit and keep watching it.
and I was so excited to know that, you know, Sound of Music's original tracks are being used in the film. Rao sir, if I may say so, has gone to, he's left no stone unturned. We've done, I'm talking about when I got into the picture. Before that, you know, he's done this whole round of getting the script together, acquiring the rights of the songs, spotting and selecting the choreographers for this movie who are from England. They've done some choreography for some very acclaimed Hollywood films. I'm forgetting the names of the films. But they've done a lot of. And Adam Murray, you must Google it. I'm forgetting the name of the film. It won an Oscar and all that. Yeah. Anyways, it's been a while since we shot the film. It's been a year, so I can't remember. Anyway, so 2 months of prepping, Rehearsals. and the kids, 500 kids. Out of that, a main cast of 10 kids was selected. 500 kids were auditioned. And so that was a very an effort which has been very, very optimal, and like I said, no stone unturned. And then the rehearsals, so that the kids were completely in sync when we went onto the floor. The choreographers came in from London, stayed here in Hyderabad for 2 months. People like Shreya, Shan, myself went in and out for rehearsals, and mammoth preparation, which I think will bear good results. Yeah, fingers crossed. Fingers crossed. एंड सर, चूँकि आपने मेंशन किया कि बॉलीवुड में नहीं बना है कोई भी म्यूज़िकल अभी तक, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे अब मुग़ल आज़म का म्यूज़िकल बन करके प्रेजेंट होने लगा है, डिस्को डांसर का म्यूज़िकल बन करके प्रेजेंट होने लगा है, आप दोनों से मैं पूछूं कि ऐसी कौन सी फिल्म आपके ओपिनियन में, अगर आपको बोला जाए कि चलो ठीक है, यू हैव दिस परमिशन एंड द राइट्स, तो आप कौन सी फिल्म का म्यूज़िकल बना करके प्रेजेंट करना चाहेंगे? एज अ प्ले, राइट। Of Indian. ऑफ मतलब बॉलीवुड, कोई भी फिल्म। Indian. Yeah. Indian film. हाँ. Well, I have not thought any story on as yet, but कोई एग्जिस्टिंग फिल्म का ही। existing film को play बनाना है। हाँ, करेक्ट। उसको म्यूजिकल बनाना है। play से film नहीं बनाना है। फिल्म से प्ले बनाना है। Like मुग़ल आज़म was made also, ना? हाँ। तो उसका म्यूजिकल है अभी। तो सोचने का चीज़ है, but I have not thought about it really. Okay. What about you, Sharman? So I don't know whether West Side Story we all know of, and that was originally a play, thereafter made as a film in Hollywood also, which was then made as a play here, and then as a film also. Okay. And yeah. अब आप उसको भी म्यूजिकल बनाओ। वो नहीं करूँगा मैं। West Side Story. West Side Story, actually, I think Josh was similar to it. Amir and Chandrachur Singh and Sharat Kapoor. Josh na? Sorry, Shahrukh and Aishwarya. sorry, Shahrukh. Yeah. So because of Amir's brother being the director, I thought of Amir. So Shahrukh, yeah. So that film was kind of similar to what West Side Story was. Yeah. So yeah, but coming to your question, if Hindi film into Three Idiots would be fun, na? Oh yeah. It would be something, yeah. The college, the university, there's so much to do, so much energy. And the songs also. Yeah, and the songs, of course, yeah. And the songs, of course, yeah. Good choice. That would be good. हाँ ना? चलो, you're welcome. चलो बनाओ. हाँ, आप बनाने वाले हो ना? Permission ले आओ. If only. Okay, since आपने बच्चों की बात करी, बच्चों को मेंशन किया, कितना डिफिकल्ट था उनको टैकल करना, कितना मजा आया, कुछ दिक्कतें हुई, बताइए थोड़ा। नहीं, एक्चुअली हमारा पूरा सेट में रियल बच्ची थी तो हमारा हीरोइन, आज नहीं है वो। And rest all to be, I mean, she was always laughing, and so, but all we chose such good actors as kids, so there was not really a big problem, not at all. And you will see on the screen, I can challenge you and your audience that not a single child would look
in front of Shriya or Sharman or Prakash Raj, that there is some lesser in any. Or when you see a very big actor is there and a amateur actor is there, then you see that there is there is no kind of, it's not mixing and it's not going together. But you will see in every frame our kids have done equally good. Yeah, I saw the trailer. I genuinely enjoyed it. So. Thank you. And what about you, Sharman? आपको कितने मजे आए बच्चों के साथ काम करके, या किसी ने आप पे प्रैंक करी, कुछ परेशान किया आपको? यार बच्चा सा स्ट्रेस या प्रैंक्स, हाँ प्रैंक्स बताओ ना फिर क्या छोटे मोटे हुए, मुझे याद नहीं है. अरे रोहन का याद नहीं है. अरे हाँ, Rohan was too much fun. Yeah, one of the kids in the film. Do we have him here? No. Okay, he's adorable and he's a fine actor and a great mimicry artist. So he would have mimicked what you are interviewing in the next shot. How you are interviewing us? He would have mimicked you absolutely, like in this shot. Pitch perfect. Wow, मिलना पड़ेगा भाई. हाँ तो आप प्रैंक बताओ. His prank नहीं है, just one of the incidences. He used to have the whole set laughing out loud. And मुझे तो बेस्ट उसकी मिमिक्री श्रिया की लगती थी, क्योंकि श्रिया दिस इज हिज वर्जन ना, श्रिया डोंट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल. जो उससे देखा है, मैंने सुना है, वो बता रहा हूँ, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगा. तो ये रिहर्सल हॉल में हमेशा लेट आती थी. शी इज़ अ थरो प्रोफेशनल, बट लेट आना, टैंट्रम्स थ्रो करना, रोना, ये सब पार्ट ऑफ द गेम है. और थरो प्रोफेशनल्स डू दैट. यू डिडंट नो, आई एम टेलिंग यू. सो आई एम जोकिंग. ये मैंने नहीं बोला, ये बच्चे ने बोला है, रोहन ने. तो रोहन यूज्ड टू से श्रेया इज टू कम. एक तो लेट, तो पहले एंटर करेगी, देखेगी कौन क्यों क्या कर रहा है, फिर आएगी, कुर्सी पे बैठेगी, और फिर नीचे देखेगी, फिर ऊपर देखेगी, कोई उसको बुला रहा है, कोई बुला रही है, फिर फ़ोन पे स्क्रॉल करेगी, फिर ऊपर देखेगी, कोई बुला नहीं रहा है, स्क्रॉल कर, फिर कोई आएगा बुलाएगा तो उठेगी, फिर काम करेगी. और वो जिस तरीके से उसको मिमिक करता था श्रेया, यू ऑल्सो हैव टू हैंड इट टू हिम, बहुत कमाल का करता था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, she used to enjoy it. We all enjoyed it. He mimicked me also and he did it so well. It is too funny. Yeah. Videos बनाए आपने? Videos है हमारे पास बहुत सारे. Actually we should put that out. And if you want, we'll send. Please do. Backstage में. मजे आएगा. DTS. Yeah, ये इतना लंबी कहानी बोली. Yeah, with that the video should be intercut. मजा आएगा. The best was Shriya came one day with a shirt, with a short and shirt. It was summer. We are rehearsing. So Shriya इतना लंबा शर्ट पहना और इतना छोटा शर्ट. And we have to share these videos with him. It's too funny and Shriya will love you for this if you share the videos. Please do. सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, देखने में तो और मजे आएंगे यार. बनता है. हाँ. अच्छा कि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, फिल्म की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, when you were kids, तो आपका स्कूल में कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था? मेरा हिस्ट्री था. Really? Yeah, I loved history and then chemistry. Wow. History and chemistry. Yeah. I hated chemistry, but Same. I was very good with maths and history. Oh God, I was never good with maths. मैं दोनों में फेल हुई हूँ, so I can't. मैथ्स में भी माइनस में नंबर थे और केमिस्ट्री में भी. so और हिस्ट्री? हिस्ट्री मेरी ठीक ठाक थी. सब हम जैसे लोग हिस्ट्री के सर को हिस्ट्री पसंद है, बहुत बड़ी बात है, because he is one genius. Yeah, absolutely. And कौन सा सब्जेक्ट बंक करते थे आप सबसे ज्यादा? कॉलेज में? स्कूल में, कॉलेज में? स्कूल में तो काम बंक कर पाते थे यार. तुम कर करते थे स्कूल में? यार मैंने एक्चुअली एक बार लाइब्रेरी पीरियड बंक किया था और मैं पकड़ी गई थी उसमें. लाइब्रेरी पीरियड कौन बंक करता है? हैं? लाइब्रेरी पीरियड में तो फ्री पीरियड होता है. लाइब्रेरी पीरियड कैसे बंक किया? मैंने कॉलेज में बंक किया है. बंक क्या किया, मैंने कॉलेज गया ही नहीं. पहले 2 साल कंपलसरी था हमारे कॉलेज में अटेंडेंस, बाकी के 3 साल में गया ही नहीं कॉलेज. आई हैव नॉट सीन माय क्लासरूम, बट येट आई हैव पास्ड विद 60 प्लस. With flying colors, you mean? Not flying colors, but average. 60 plus तो भाई फर्स्ट डिवीजन ही हो गई ना. फर्स्ट डिवीजन, हाँ. तो मुबारक हो. Sir, what about you? Did you bunk any classes in school or college? No, not really, but there was a stage. I was a very good student from the
class 1 to class 10, 11, and then there was this Telangana agitation. Not the current one, but in 1969-70. So वो तो पूरा 2-3 साल बंकी किया हम, कॉलेज ही नहीं गया, not one day, 2 days. Very good. We have गोल्ड मेडल मिलने चाहिए आपको. yeah. So it was completely different, and we were busy in agitation and things like that. But otherwise, when I went to college, I'm very serious student. Absolutely, sir. आपसे बात करके भी मुझे पता चल रहा है, जैसे शर्मन भी लुक्स दे रहे हैं तो पता चल रहा है. अच्छा ठीक है, तो ये शर्मन, ये वाला सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों को ये बात नहीं पता है, तो मैं ये बात जग विख्यात करना चाहती हूँ कि शर्मन ने क्या बोलते हैं 3 Idiots में जो सॉन्ग है गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन गाया है ना शर्मन? अरे नहीं यार, बट क्रेडिट्स में तो आपका नाम है, गाया तो है क्रेडिट्स में आपने. मेरा नाम है क्योंकि मैंने कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइंस जो आती है बिटवीन द सॉन्ग्स, दोज आई हैव नरेटेड. तो क्या सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो. अच्छा. किताबों के बोझ ने कंधों को झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया. 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी. लिख लिख के पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला. स्लो क्लैप, नो प्रॉपर क्लैप ना. रोडी सल्यूट चाहिए वो तो वो दे सकते हैं. ये रोडी सल्यूट होता है. ऐसे स्लो करके. ओके, नेक्स्ट सवाल मुझे जानना है आपसे कि जैसे स्कूल की और कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, तो आप डू यू रिमेंबर एनी ऑफ योर टीचर्स जो बड़ा विश्वास करते थे कि हाय बलाइन ले लूँ मैं इस बच्चे की, ये तो बहुत अच्छा करेगा? कोई ऐसे टीचर्स हैं जो मतलब इनके साथ होलसम? From the primary school till my JNU days, there is always 1 or 2 good teachers. So are you still in touch with them? Yeah, unfortunately they died, but even in fact my professor in JNU just died last month, and I went for his memorial. Oh. So I was in touch. After COVID I went and met him, Rahmatullah Khan. Oh, lovely. So I was always a good student wherever I studied. Yeah. Wow. एक बहुत खूबसूरत टीचर थी जिसका मेरा मन करता था कि मैं उसकी क्या बलाए हाँ. क्या कर दूं? बलाएं ले लूं. हाँ. तो बहुत खूबसूरत थी. कौन सी सब्जेक्ट की टीचर थी? वो थी इंग्लिश की. इंग्लिश की टीचर थी वो? बहुत बढ़िया. कौन सी क्लास में थे आप? इंग्लिश पढ़ाती थी वो. कौन सी क्लास में थे आप? हम लोग थे, चाइल्डहुड क्रश था ये मेरा ख्याल है 4th-5th स्टैंडर्ड में थे. बट उसके साथ वो जो क्रश था वो कांस्टेंट रहा. उसके बाद एक टीचर आई जो क्या सिखाती थी वो याद नहीं है, बिकॉज मैं उन पे ही ज़्यादा ध्यान देता था. मिसेस सुखिया करके. इफ़ यू आर हियरिंग दिस मैम, आई लव यू, एंड शी गिव मी अ लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ लव एंड केयरिंग. तो या सम ऑफ द टीचर्स आई हैव बीन लकी अगेन, लाइक टीचर्स हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ लव, ऑल मतलब इन माय स्कूल लाइफ, इन माय कॉलेज लाइफ. और अभी भी मतलब एक्टिंग भी जब आप कर रहे हैं. You are the teacher? No. Okay, मतलब आप रिहर्सल्स में जा रहे हैं, जो टीचर्स आपको एक्टिंग सिखा रहे हैं. Of course, yeah. सर मेरा अगला सवाल आपसे है, शर्मन मेथड एक्टर हैं या ही इज अ डायरेक्टर्स एक्टर? ओह अच्छा, पूछ रहे हो. हाँ. I thought you stated it. No, because he is a very good actor. And my way of looking at was that I briefed them, gave the script, and I told what. But I'm not a director who would say that I want this way only. I would look at their action and see if Sharman is, because Sharman is doing exactly what I want. So if Sharman does what I want plus X, I will let it go. If he does below only, then I'll go quietly and say, can we do it differently? But to have that, then I'm very clear what I want. So if any actor coming exactly like that or plus above, if they adds, many times he added in his
Shreya and all other actors. So I don't say aisi hona chahiye, because basically since I have written the script myself, so I know exactly what I want. So I've learnt a lot, and then if you give that freedom to actor, then they deliver better than sometimes we think of. So that is I learned in this film. Since I casted mostly very good actors. I didn't go for whatever so-called stardom, or of course they are all stars, but Sharman, Shreya, Shan, Prakash Raj, Suhasini Mule, Benjamin Gilani, Vinay Verma. So they're all very good actors. So the best part of Rao sir, I think, like you mentioned, he was very clear about what he wanted. There was no confusion on that front, and that makes the journey so much easier and smoother, because when you are not sure, and which is also fine, that each director has an approach, but for me, I'm comfortable if I have a director who knows what he or she wants, and then I have to just follow that path. There are variations that can be given to a certain emotion, to a certain scene, like we all know, and sometimes it's the job of the all the time rather, it's the job of the director to tell us that this is the emotion he or she wants out of it, and not the other variation, not the other variation. And directors who are sure about that can do that easily, as opposed to other directors who are not quite sure, and then you kind of give suggestions and it's agreeable to them, then you pick out the mood. If there are possibilities of doing it 3 ways, then you feel that this is putting everything, giving attention to every aspect of it, and then you feel that maybe this is the best way out. That takes a little longer, but with him, because he knew that no, this is what I want, it was much smoother. Yeah. Super, मतलब अच्छी chemistry रही आप दोनों की. जी जी. And sir, since you mentioned all these in sub stalwarts के नाम आपने लिए, and you're working with them for the first time, yes, and especially the maestro, how is it? How was the experience? Well, experience with Maestro Ilayaraja sir was very good. First time I went with the script to him, they said it's a musical with 11, 12 songs, and there are 3 songs going to be from Sound of Music. Sound of Music. So I thought, any music director would say such big classic and my music will be compared, or whether they would hesitate. But in 10 minutes he said, yes, we will do it. Oh, wow. So, that is confidence. Then when we sat with, but only thing he said that Sound of Music, Rogers and Hammerstein, they are like guru, he respects them. So he said that kind of music I cannot record score in India. We have to go to London, and we went to London Philharmonic, and with 54 orchestra piece we recorded those 3 songs, but under his supervision. The music is by Rogers and Hammerstein, Richard Rogers, but his own songs composition we sat through number of days, number of sessions. But that is to only develop. But he is so quick. He gives the tune in no time. In fact, it is a little bit scary, because he can give you in one situation, he can give 4 tunes in 1 hour. Now you have to pick up. Sometimes you may make a wrong choices also. So that was my scare. It was not at all his problem. So he is a genius. He just gets. At only one song which you paid here, he said, your songs are all little western, एक तो Indian थोड़ा धमाका लगाइए, आप थोड़ा folk based, Indian based पे. So he gave the tune and we wrote, but most of it we wrote, what given a situation, and our lyricists who have written to me, Shivani and Dr. Sagar and Raman in Hindi. Those lyrics when we give, sometimes I believe people's music directors would say, a lyric को ऐसा mix करना मुश्किल है, but he had no problem at all. He could just generate the music for the lyrics, and where certain suggestions where he gave 1 or 2 songs where he gave tunes, we rewrote to it, and then recorded it. So it was very good experience.
फाइनली बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हम दोनों ही बुडापेस्ट गए थे. Background score was again symphony. He wrote for around 70-80% of the background score is symphony music. So we hired Budapest Orchestra for background score. So it was a great journey. It was a great experience and great learning because he's a maestro. Yeah, correct. And since it's your first film, right, and you've written it, directed it, and then working with such stalwarts, so amazing experience रहा होगा. I know it's a great experience. Yeah. So now I don't think I'll have fear to direct anybody now. What about you, Sharman? आपका कैसा रहा? Overall experience, and of course, you know, I was just bowled over by the effort Rao sir had put in from the rehearsals which I mentioned to spending time on the shoot, the extravagance in terms of the settings and the setup, and I knew he was giving it his all, and I am at my happiest when I see that my director, producer, Rao sir also is the producer also of the film. So when someone is giving that kind of commitment to a project, I feel very happy and I feel so safe, and it feels like a picnic for me, and that's how it felt. Yeah. And since the film is shot in Hyderabad and also in Goa, right? Yes. कैसे काम किया गोवा में? ओफ बहुत मज़ा आया यार. गोवा है और 2-3 शेड्यूल हुए हैं ना, आई थिंक गोवा में 2 शेड्यूल हुए हैं. तो एक बार बारिश हो रही थी और एक बार बहुत गर्मी थी. तो बारिश तो बहुत परफेक्ट था, इन द सेंस वी वर शूटिंग इंडोर्स दैट टाइम. सो इवनिंग्स गो आउट एंड जस्ट सिट एंड you know, watch, chill, yeah, be at the beach, do whatever you have to do, but chill. And you know, Goa is my favorite place, one of my favorite places. And then of course the summers was hot, but yet in the evenings it's time pleasant. to chill. Yeah. And it's pleasant. Yeah. Sharman, tell me, since like आपके डैड एक थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, तो बचपन से ही घर में पता था कि भाई स्क्रिप्ट्स आती रहती हैं. तो जब छोटे थे तो किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद था या पापा की स्क्रिप्ट्स उठा के पढ़ते थे? Yeah, scripts is very easy for me to read, but books I can't read it. That's not me. I just doze off, literally. I don't know what it is, but then I heard Rekha ji say one day, or rather read one of her interviews, and she said that I've not read a single book, like something to that effect. And I have learned and lived from I've lived and learned from my life experiences, and I think that's what I'm also doing. Apart from scripts, books is too tough for me, but audiobooks are now introduced, so people like such as me who otherwise doze off on the second page, I can listen to an audiobook at least for 11 pages. Okay. Then I deal with it the next day. That's very precise. 11 pages. तो बचपन में मम्मी पापा ऐसे जब बच्चों की नुमाइश नहीं लगाते, चलो दिखाओ डांस करके गा करके, आपको शुक्र कितनी है बारी? नहीं मेरे माँ बाप ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं थे यार. बहुत फुल cool parents I had. They never made me do any such embarrassingly awkward things, but I do that to my children. I love it. I said, आओ बच्चों. तो क्या बोलते हैं आप अपने बच्चों को? क्या ऐसे चलो बेटा नाचो. नहीं कुछ बोलता नहीं, हिम्मत नहीं है मेरी. तीनों जन, आई हैव 3 kids, तीनों मिलके मुझे बहुत मारेंगे, तो कोई पंगा नहीं ले सकता हूँ. समझी. एंड सर, सिंस लाइक आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो गई है एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो एज अ राइटर, अगर मैं आपसे पूछूं आप बॉलीवुड के किन शख्सियत के साथ काम करना चाहते थे, हु विल दैट बी? हैव यू थॉट अबाउट इट? Any actor you mean? एक्टर और डायरेक्टर. जैसे आपने फॉर दिस फिल्म ऑल्सो यू वर्कड विद, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द सिनेमाटोग्राफर, बट किरण दियोहंस. करेक्ट. उन्होंने जोधा अकबर के लिए सिनेमाटोग्राफी करी है. Yeah. तो कौन से एक्टर, डायरेक्टर या राइटर के साथ आप काम करना चाहेंगे, और म्यूजिक कंपोजर फॉर दैट मैटर? You know, I don't do the pre-judge the thing. I only have my characters in mind. So if I have written 5-6 scripts. Okay. But when the script comes out, then depending on the budget and all, then we go to who is suitable. Okay. Of course, now being a producer, now I've learnt that little bit marketability and also to सर, बट हाइपोथेटिकली कि सब मिल रहा है आपको, तो आप किस किस को पिक करोगे, वो मैं जानना चाहती हूँ.
क्या इधर कोई हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप बोल रहे हैं कि मुझे अमिताभ बच्चन चाहिए या मुझे चाहिए क्या बोलते हैं AR रहमान के साथ काम करना, ऐसे पूछ रही हूँ मैं. No, I actually literally I don't have that kind of a preconceived notions. ओके ओके ठीक है, क्विकली वील प्ले अ गेम. शर्मा, बॉलीवुड फिल्म्स तो देखते हो गए? हाँ सर, आपका मुझे आइडिया नहीं है, आप देखते बॉलीवुड फिल्म्स नहीं देखते? Indian films, bro. Indian films, The ठीक new word is Indian films. ठीक है, कूल है. तो क्या सीन है, आई विल जस्ट क्विकली टेल यू. मैं एक कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन दूंगी आपको एंड देन यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द कैरेक्टर, नॉट ऑफ द फिल्म. अच्छा, नहीं मेक इट इजी है ना. नो 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 फिल्म कर दे, कैरेक्टर का नाम मुझे खुद के कैरेक्टर कोई बात नहीं, चलो चलो ठीक है, वो देख लेंगे फटाक से. जैसे एग्जांपल में देती हूँ, जिसे कटप बाहुबली को मैंने मारा. हाँ, बाहुबली को मैंने मारा है, तो कटप्पा इज द आंसर. ओके, आए समझ वैसे. मैं पिक्चर का नाम है. चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके लेट मी स्टार्ट. लेट्स ट्राई. ठीक है, तो मैं बस क्यूज ध्यान से सुनना, ठीक है. आई वाज बोर्न इन युगांडा, स्टडीड इन पौंडीचेरी, इसलिए हिंदी में हाथ थोड़ा तंग है. एंड आई मेक श्योर कि मेरा माइंड शार्प रहे, इसीलिए मैं एक बंगाली बाबा का दिया हुआ चूरन खाता हूँ. तभी लोगों ने मुझे साइलेंसर कहना शुरू कर दिया. ओ ब्रो, 3 इडियट्स, चतुर वेरी समथिंग लिंगम, चतुर रामलिंगम. ओके, दूसरा है, मेरे हिसाब से आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ संजू बाबा, इतना कि मैं उनका वास्तव फिल्म लुक रियल में कॉपी करता हूँ. मैं दिल से बड़ा जनरस हूँ, इसीलिए मैं आसानी से पैसे तो लेंड कर देता हूँ, वसूल नहीं कर पाता हूँ. कम ऑन शर्मन, यू हैव टू गेट दिस. वसूली. हाँ, अपने सर वसूली भाई फ्रॉम गोलमाल. यस. ओके, एक और करते हैं. सेंट जेवियर्स की सबसे फेवरेट इंग्लिश टीचर हूँ मैं. मैंने ही राहुल से उस दिन क्लास में रोमियो जूलियट पढ़ते हुए पूछा था, प्यार क्या है. ऑल्सो कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर मल्होत्रा गर्ल्स को शॉर्ट स्कर्ट्स पहनने के लिए मना करते हैं, बट मुझे कुछ नहीं कह पाते. नहीं काजोल. नहीं, टीचर. हाँ, कुछ कुछ होता है. मैं कौन थी वो? ओहो, कौन थी? मिसेस ब्रिगेंजा. मिसेस ब्रिगेंजा, अर्चना पूरन सिंह Yes. मैम. ऑफ Yes, कोर्स. yes. यार सॉरी. ठीक है, एक और करते हैं फटाक से. हालांकि मैं विलन हूं, पर जब भी कोई इंसान खुश हुआ, उसने मेरी एक्सेंट में मेरा एक एपिक डायलॉग लाइफ में कभी ना कभी बोला है. आई एम ऑब्सेस्ड विद ब्लैक एंड गोल्डन कलर. और कलर से याद आया, मेरी फिल्म के हीरो को सही से देखने के लिए मैंने स्पेशली लाल रंग के चश्मे मंगाए थे. ये तो बहुत डिफिकल्ट है ब्रो. कैसे लाल रंग के चश्मे? मैंने कौन? पहने थे. नहीं, खुश होता है इंसान तो वो क्या बोलता है? फिल्मी डायलॉग. मोगैम्बो खुश हुआ. तो मोगैम्बो हमारा आंसर. मोगैम्बो देन. वेरी गुड शर्मन, बहुत ही आपने खराब खेला, बट फिर भी कैमरा के सामने मैं आपके लिए तालियां जरूर बजाना चाहूंगी. वेल डन. मैं भी बजा देता. सर, पार्टिंग थॉट्स एंड में क्या कहना चाहेंगे जाते जाते अपने व्यूअर्स से? No, we made this film very passionately on a very serious subject, but in a very entertaining way. So on May 12th, go to the nearest theatre with family and friends, and it's a film to watch with your family and friends and enjoy. Right. You will not regret. 12th of May, to a theatre near you, away from you, Anywhere. in a different state, anywhere. Please go watch it. Yeah. Watch Music School. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच शर्मन, बड़े मजे आए आपसे बात करके. एंड मैं हूँ मेघा, मिर्ची प्लस पे रहिए. Megha Joshi, मेघा जोशी. related to me, नो, my ex-wife. No, my third wife. No, my sister. या योर सिस्टर. No, my No. mother.